So today we will do Angular setup. That's it. कुछ और नहीं करना क्योंकि टाइम थोड़ा कम पड़ गया अपने पास. So Angular we have to like set up. So Angular एक TypeScript framework है, JavaScript framework भी कह सकते हो. You can say that way. And to set up this, the first thing you have to install certain things. Like when we started Java, so we set up JDK version, right? I gave you that you can use 17 or 14 version of JDK. Sure. That's what we did. So something similar we have to do with Angular. So you cannot just download Angular right away. To have that Angular in your machine, you have to download two other softwares first. First is Node, okay, and next is NPM, okay. So you have to download these two softwares first of all in your machine. So who knows that where things are, and then by using these two softwares, we can set up Angular in our machine by using some command line or commands. So if I have to check, let me write command prompt. And if I type node version, so you can see it is saying 20 version. And if I type npm version, so it gives me 10.24. So these are two software which should be installed in your machine. Let's try Angular. What's the command? Uh, Angular is not detecting. Why? Okay, this is strange. Angular is not recognized as an internal extra command, but ng should work. Ng hyphen version. No, it was saying some help as well. Let's try that. Ng is there. Is it like without hyphens? I forgot how to check. Okay, yeah. So without hyphen it takes. So you can see, just typing ng version, we can get the Angular version. So that's how it shows. Remember when we run Angular, sorry, Spring Boot application? So it writes in console Spring Boot somewhere, right here on console. Okay. Yeah. Okay. Something happened here as well. So most of the things or softwares we use in our development, they write this way by using hyphens to draw their own logo or their names. Okay, by the way, Angular is 16 here, Node is 20, the package manager. The NPM is 10.2.4 and OS is this. And these are some of the libraries which is used by Angular itself. So let me take a screenshot of this part. Here we are. So what do you have to write? You have to write ng version command. Okay, and then you can get all these things. So let's read this thing again. So we are already keeping, okay, let me have that version as well. Java version. So it's Java 21, right? Let's take a screenshot of this as well. Okay. So we have Angular and Java in a machine. So JDK is 17. On my actually system, it it is using 17 in a machine. So Java is 17 or 20. Then we are talking about Node. So Node for that it's 20.11.0. Then npm is 10.2.4 and Angular
we have 16.0.3. So these are the version which it should be in your machine. Only then you can work with the Angular. Fine. Okay, And bolo. all of these are three different softwares, right? I need to download these separately: Node, NPM, and Angular. Right. You need to download these two things, and by using some commands of Node and NPM, we can set up Angular. So you have to download Okay. these two only. Download from there. Definitely from official website. Don't use any other things. Node is really popular tool or software for web development. Official. And then once we have these two softwares, later we will uh, download Angular by using um, npm command. Fine. Okay. So let's check that first of all. Then you have to set up in your machine. See if you say node download for Windows or whatever. So we have an official website node.js.org. Select a version which I just mentioned. Since in my machine it is 20.11, so we can go with this version as well. 20 this one 2018. Okay, this is the latest version. Then you can download it. It's MSI or zip file. Okay, whatever works, it will be done. Then next we need npm for Windows. So you can download this from here. Actually, you know what? When you run node command, so you will get this in npm with it. So you don't have to even go and explicitly download this software in a machine. Okay. So downloading and installing, even they have their own document. This is an npm JS file, Node Package Manager JS for JavaScript. So publish and this we strongly recommend using a Node version manager like npm to install Node.js and npm. We do not recommend using Node installer since Node installer process installs npm in a directory with local permissions and cause permission error when you run package locally. So this you have to do. So I have to make sure that you are using correct thing in your machine because this takes time. So I'm stopping the sharing and share your own screen. Let me guide you how to set up Node, NPM and Angular in your machine. Clear? Before you proceed, uh, definitely you need to create your project. So once you have Angular in your machine, you can write one command, and by running that command, you can create project. So like for Spring Boot, we tend to do what? We tend to use Spring Boot website that's start.spring.io. Correct, Kiran? But in Angular, it's a different case. If you have to create a new project in Angular, you have to run certain commands. So I'm deciding that somewhere here, this I'll create a new project folder for you. Angular. Here I will create new project. So here I'll go into new project. So let me run a command right here. Okay, so this is our location, and here you have to write certain command like ng, then new, and let's say this is going to be my project name, Angular um, course, or let's say training. Um, Kiran, this much is clear how to create project. See, like I'm we're creating it from command prompt, right? हाँ, हम लोग project बनाएंगे through this command ng command. ठीक है. So when Mhm. this command goes off, so क्या करेगा ये Angular? It will create a directory right here, and it will have lots of files in it. Even if you have to print just hello, it will take lots of stuffs. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बस एक दो फाइल बनाए और हो गया. Angular takes lots of files, at least 7 to 8 files just to print that thing.
Mhm. Okay, because when these guys develop this Angular, so they have this mind that we sometimes we have to enlarge our project, so we create multiple modules. So this Angular is modularized, multiple modules होंगे इसमें. That's why it becomes bigger. Even you have to print hello, बहुत सारी फाइल्स बनानी पड़ेंगी. तो वो अपने आप देता है. So जैसे ही प्रोजेक्ट पे मतलब लिख के एंटर मारोगे, so what will happen, it will create a project. और ऐसा नहीं कि झट से हो जाएगा, तो कभी कभी टाइम लेता है ये. Depends on the network speed and sometimes it because of server. So मैं भी इसको एंटर क्लिक कर रहा. Okay, let me do that. मैंने एंटर क्लिक करा. It will ask some questions. So would you like to add Angular routing? I'll say no for this time. Okay, no is done. Then do you need what kind of file or formatting, like CSS, SCS, and this? So I'll take it default and I'll keep. You can use cursor. Okay, see, up down Mhm. button and it will move. So I'll keep on CSS and then one more enter, and then you can see it is installing. So it will download lots of files. This might take some time, sometimes 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. So in the meantime, let me show you its official document, the Angular. So this is its official web page, and right now Angular 19 is there. So definitely we won't go for latest, right? As I suggested, never use latest version. You will face lots of challenges even for building a project. So which version we are going to use? 16. Fine. Okay. Now if I scroll down, it says Learn Angular, and I'm just scrolling. Okay, that's how they design. You can see I'm just scrolling. They have designed this beautifully. You can see I'm just scrolling, and lots of things coming in a single screen. See, it's look like some kind of movement is happening, some kind of video or GIF feeling. And this is first screen. This is going to be complicated, okay, Kiran? So much Yeah. complicated so far we have done in your Java journey. This is 5 times complicated as per the Java. In Java, I can write one line and I can see the output. Right click, run as a Java page, right? That was so easy. This is reverse of it. It's too tough to understand if you won't give time. So according to your response, I will teach you Angular and I'll put the contents. If you won't give me that response what I want, so believe me, this is going to be affect your learning process. You have to give time. So website gives lots of information and definitely we have lots of docs and tutorials on its official website. So I'll suggest you certain things, but um, at this moment, the important thing is you have to understand the forms, HTML forms, what are forms and how it works. But this is something which is really uh, difficult or in terms of not that simple as we saw in simple HTML. You have to use or learn lots of keywords from Angular. Remember in Java we have lots of reserved keywords. Likewise, Angular is again a language. It is a extension or a framework over JavaScript. So it uses lots of JavaScript features, TypeScript feature, and that makes complicated. In terms of again, I'm comparing to Java whatever you have learned so far. Okay, let's see, is it done? And yeah, you can see project is created. And if I go back and check the project, you can see there's a project, right? And if I just show you its size and important, can you see how many what's the size of it? 270 MB. Just to print a hello, I need to have Mhm. this much size in my storage. I don't have a right or anything, right? It's just everything is customized. Sorry, not customized. Everything is default functionality. So just to have that hello thing for now, I have this 270 MB file and check out the files it has. 25,000 files and these many folders. Can you see the complicatedness here? So if I expand, lots of things are there. But again, we will discuss it later. The first thing for you right now, install Node, install NPM, install Angular, and create first project in your machine. Then I will teach you something. Otherwise, you will be struggling with the installation only. Clear? Mhm. Okay, so I'm stopping the system here. I mean the screen sharing. Share your screen and let's see what comes up. So what is the version? 20. 18.1. Yeah, you can use this one. 2018 one. That's You can use MSI. irresistible. Yeah, use MSI.
It's a small software for you. Okay. Then run it like normally we run an application. Downloads. Double tap. Okay. Next. Check. Accept it. Accept. Next. Okay. Next. Oh. Okay. Keep it. Next. Um. Wait. This will also install chocolate the script. Oh no, leave it. Just next. Yeah. Install. So Okay. Finish it. Now let's first of all check whether we are getting default. So open a command prompt, command line, cmd, open and type nod space hyphen v. Node, node space hyphen v. Enter. So it should say 20 something. Great. Now type npm hyphen v, same way. Usually it comes with it. Okay, great. So you have both softwares, correct? Now we have to uh, uh, set up or download a specific Angular version. So type Angular or wait one thing. No, type sorry, NPM. You have to download first of all. NPM space. on the command, Yeah, right here. NPM space install. Install. Then space and then hyphen G space. Then type at and let me check the version I have in the machine. at the rate or This one at the rate. Then type 16 0 16 dot 0 dot 0 dot 0 dot 3. Okay, wait. So npm install hyphen g at my bad. After at sign, you have to type Angular. Okay, Angular, Angular. After R, press slash, type slash CLI, and again type at. Okay, so hyphen at Angular space slash li at. Okay, press enter. Let's see, does it works or not. Okay, something's working. Let's see. So what we just did, we are taking help of npm to have Angular in your machine. Okay. Do one thing again. Open a new command prompt. New command. Don't use this one. And type ng space version. Enter. Okay. Because running scripts is disabled on low system for this machine. See what? I was expecting this kind of stuff. Okay, how to resolve it then? Um, do one thing. Copy this line. Um, from starts with roaming. Highlight the very first red line. Roaming slash npm. So you can copy. Start from roaming npm and go till the system. Next line. First statement. First word actually. Go till the system. That's it. Yep. Copy it. Google it. I'm just giving you an idea how to resolve the issues. Don't just wait for me. The error is coming, so I'll wait. No, search it right away. Oh, not Gmail. Google it. Yeah, press enter. So same thing happened here. They tried ng and they were getting same issue, right? You can see yes. it says the script is disabled. And by default, that's a feature of our Windows machine.
They don't allow scripts right away. So scroll down, you must see some solution. And this is one of the best websites, Stack Overflow. Scroll, scroll, scroll. Wait, scroll, go up, go up. So whenever you see any green check, see under 908, you can see green check. That means it is like supported by multiple developers that this solution worked out for them. So remove npm from the directory, then try clean the npm cache, and then okay, great. Well, okay. So okay, now open the directory. See users your name wherever that. Open the command line first of all. Let me guide you again. Command line. Then see the what it says. See users my work app data roaming. Open that folder. This whole entire folder till npm folder. See users till npm. Open the directory. See directory and users my work app data roaming. Can you open C? Like Can you open C drive? Users my work first one. Then what was that? what was Check, that? check. Just move it left side, right side. App data. Can you see? We must see in the Stack Overflow, right? So That's there, moving but yeah, open the app data. We are already there. data. Okay. Yes, Yeah, one second. So is app data. it is hidden. That's fine. See, we have option view under the menu bars. View menu. This one, right? I cannot see the cursor. Click on it if you can. View. More three dots after that. Last one. The show. What it says. Hidden items. Last one. Yeah. Check now. You can see app data. There it is. App data. I can see the folder. Open that. Yeah. Roaming. NPM. Now, what was the file again? Open the error. Command line error. Which ng? Command line. ng.ps1. Okay. So open the directory. Yeah. Last one. Delete that one. Last file. Just delete. Or you do one thing. Cut this file. Cut it. Right click. Cut. You're not clicking on it. Come on. Cut. There's a cut sign. Yeah. Put it somewhere. So we can, if you want, we can get it later. कहीं रखो उसे कहीं मूव पेस्ट कर दो किसी भी डायरेक्टरी में डेस्कटॉप में रख सकते हैं ना अभी? डेस्कटॉप में रख दो हाँ कुछ टेस्ट करना है इसलिए आई एम जस्ट डूइंग दैट पेस्ट इट ओके ओके just कहाँ पर है आई कैन नॉट सी दैट अच्छा ठीक है this one. ओके ठीक है अब एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलो टाइप cmd और सर्च सेम कमांड ng वर्जन करो ng स्पेस वर्जन हम्म ठीक है अब हो गया फॉर्मेशन नो कर दो एन प्रेस एन एंटर ठीक है बढ़िया ऐसा सेटअप होता है देखो ये खुद से करना मुश्किल होता है तुम्हारे लिए है ना वो कमांड करने मुश्किल होते हैं ओके ग्रेट तो now you can see it shows that node version npm version and even angular version can you see all three Yeah, what the current version of Node is अरे उसे this छोड़ो Angular Node? हम्म Yeah, और package manager and okay. ठीक है ना npm node and angular we can see right so your system is ready to execute some angular commands अब एक काम करो जो भी लोकेशन जहाँ पे अपना सारा काम रख रहे हो प्रोजेक्ट्स रख रहे हो उसको ओपन करो जो भी कोड रखा है अभी तक तुमने ओपन दैट लोकेशन ड्राइव में जो भी सी ड्राइव के अंदर फोल्डर बना के रखे हुए हैं
मुझे लगा जावा क्लास फोल्डर के अंदर है, सी या ड्राइव। वही। वो तो सी या ड्राइव के दैट्स अंदर है वो तो। या यहाँ पे लिखो, राइट क्लिक करो, एक नया फोल्डर बनाओ, एंग्लो वर्क स्पेस करके, न्यू फोल्डर। आ तो रहा है न्यू, न्यू पे जाओ ना, क्या कर रहे हो? देखो एंगुलर स्मॉल लिखना सब कुछ, ना 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 स्मॉल में सब लिखो, एंगुलर हाइफन LAR हाइफन वर्क स्पेस। ठीक है, एंटर मारो, एंटर जाओ उसके अंदर, एंटर। अब यहाँ पे तुमको एक एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना है, राइट? तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इतना पाथ लेके आओ, कमांड में जाके यहाँ तक का पाथ लेके आओ। कैसे करते हैं आइडिया से आए, पता है कि नहीं पता? पता नहीं है। अच्छा लिखो फिर, लिखो CD सीडी। स्पेस C कॉलन स्लैश, कॉलन का कॉलन, कॉलन, C के बाद C कॉलन स्लैश, सेमी कॉलन नहीं कॉलन, उसी के ऊपर शिफ्ट दबा के करो। अब टैब प्रेस करो, टैब करते रहो, टैब करते रहो प्रेस। चलो चलो देखो जावा क्लास आई लिखी हुई इसमें, ये आया, एंटर मारो। ठीक है, अब CD लिख के वापस जाओ उसके अंदर, CD लिखो फिर से, CD स्पेस, अब टैब दबाओ स्पेस लगा के, हाँ एंटर मारो। एंटर चाहिए ना पुनः वो, फिर से करो, हाँ एंटर, आ गए। तो दिस इज अ प्लेस वेर यू विल कीप योर एंग्लो प्रोजेक्ट, क्लियर? अब यहाँ पे लिखो NG स्पेस न्यू NEW स्पेस, और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोजेक्ट का नाम। तो कुछ लिख दो भी, जैसे मैं लिखा था एंगुलर ट्यूटोरियल या एंगुलर क्लास, जो भी तुम्हारे समझ में है, स्पेस मत देना बस। इंटर कर दूँ? एंगुलर के बाद ना हाइफन लगा दो, वो थोड़ा सा लगेगा उसमें, एंगुलर हाइफन क्लास, और क्लास के एंटर पे जाके एंटर मार दो। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है, राउटिंग नो कर दो, एन एन प्रेस, एन टाइप करके प्रेस एंटर, और एंटर प्रेस कर दो फिर से, डिफ़ॉल्ट CSS रखेंगे। ओके, सो ये क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट इज बिल्डिंग अप, लेट्स वेट फॉर अ वाइल। सो क्या होगा कि प्रोजेक्ट बिल्ड कर देगा, और अब नाउ यू कैन ओपन दैट एंग्लो वर्कस्पेस फोल्डर, जो C ड्राइव में हमने बनाया था अभी, मैन्युअली बनाया था ना, सी एंग्लो वर्कस्पेस करके, उसमें जाओ, यहाँ पे बन के आ गया है ना। अभी थोड़ा ही फाइल होगा, ये इट विल डाउनलोड ऑल दीज थिंग्स। सो वही सेम अप्रॉक्स 270 to 40 के आसपास MB में ये फाइल्स लेके आ जाएगा। अभी डू यू हैव VS कोड? बीएस कोड नहीं। करो करो डाउनलोड करो, इक्लिप्स पे, सॉरी गूगल पे जाओ, VS कोड डाउनलोड करो, लिखो विजुअल स्टूडियो कोड लिखो, या वी, हाँ स्टूडियो कोड, डाउनलोड, एंटर, फर्स्ट लिंक इट्स फाइन, ये फर्स्ट वन, जो भी इसका सिस्टम AMD वाला है, क्लिक कर दो उस पर, हाँ ओके। सो आई गेस यू हैव टू डाउनलोड इट, एक्चुअली इंस्टॉल इट। EXE ट्राई फाइल है, डाउनलोड। हो गया हो गया हो गया, हो तो गया। ओके। डाउनलोड फोल्डर खोलो, गो टू डाउनलोड फोल्डर, फर्स्ट है ना VS को, डबल क्लिक कर दो इस पर भी, इंस्टॉल करना है इसको तुमको, एक्सेप्ट इट, नेक्स्ट, 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 ये तो सॉफ्टवेयर कर सकते हो, एड ओपन नेटवर्क्स डायरेक्टली कंटेंट, नहीं ठीक है नेक्स्ट कर दो, इंस्टॉल, यस। तो जैसे हम लोगों ने जावा के लिए इक्लिप्स यूज़ किया था, लाइकवाइज फॉर एंगुलर कोड वी हैव टू यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है? ये भी जल्दी हो जाएगा।
ओके, फिनिश कर दो, लॉन्च हो जाएगा विजुअल स्टूडियो। कभी इससे पहले यूज़ किया विजुअल स्टूडियो कोड? नहीं। ठीक है, इसको बड़ा कर लो स्क्रीन पर, मैक्सिमाइज इट। ठीक है, सो इसको ऊपर से क्लोज कर दो, जो ऊपर लिखा रहा है वो क्रॉस लगा दो टैब पर, लेफ्ट साइड में टॉप है ना, हाँ इसको क्लोज कर दो। ना को वेरीफाई कि वो प्रोजेक्ट डाउनलोड हुआ वहाँ से, कमांड लाइन से। एंगुलर का प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं ना, हम लोग क्रिएट करते हैं एंगुलर कमांड लाइन पे। हो गया, गुड। अभी क्या करना है? यहाँ तक कोई डाउट या क्वेश्चन है कि क्या किया हमने अभी तक? हमने लाइक सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किया और प्रोग्राम बनाए। प्रोजेक्ट बनाया अभी, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाया बनाए, है ओके। ना। अब उस प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे वी एस कोड में। सो अब वी एस कोड पे आ जाओ। इसको बंद करूँ या कमांड लाइन को या अभी ओपन रखूँ? अभी ओपन रखो, बाद में बंद कर देना, क्लास के बाद बंद कर देना। बस स्विच करो वी एस कोड पे जाके, एंड गो टू फाइल, ऊपर ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर, दिस वन। अब वो सी ड्राइव में जाके उस प्रोजेक्ट को लोकेट करो, सी, देन जावा, जावा क्लासेस में था ना वो, भूल के जाते हैं जावा क्लास, एंग्लो वर्क स्पेस, ऊपर वाला। एंग्लो वर्क स्पेस। अरे ऐसे नहीं भाई, रुक तो जाते, मैंने कहा था ओके करने के लिए। बाद में क्या करूँ इसको? इसको करो आई डोंट ट्रस्ट, जो नीचे लिखा है ना बॉक्स में, नो आई डोंट ट्रस्ट, और वहाँ से डिलीट करो, से राइट क्लिक करो प्रोजेक्ट के ऊपर, इसको एक क्लिक, सॉरी वी एस कोड को बंद करो। पूरा सॉफ्टवेयर बंद करूँ ना पूरा? एक काम करते रखो, फाइल पे वापस जाओ, लेट्स ट्राई दैट वे। फाइल पे जाओ, ओपन फोल्डर, एंग्लो वर्क स्पेस फोल्डर को खोलो, ओपन करो उसे। अरे ओपन करो उसे, क्लिक करो डबल क्लिक। अब सेलेक्ट फोल्डर करो, नीचे बटन जो आ रहा है, अब ट्रस्ट करो उसे। एक मिनट वेट वेट, जो चेक बॉक्स है उसको चेक करो, चेक बॉक्स को टिक करो, नो आई ट्रस्ट द ऑथर, यस क्लिक, ओके। तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। हम्म, अभी क्या करना है तुम्हारे को, इसको बंद कर सकते इसको हो, क्या करूँ? क्रॉस कर दो वहाँ से, यहाँ से हाँ। ओके। फाइल पे वापस जाओ, फाइल पे तो नहीं मिलेगा। देखो वहाँ पे एक रन का ऑप्शन है, मेन्यू बार, रन, रन रन रन, इसको छोड़ो, फाइल के बाद दूसरे मेन्यू जो है रन, उस पर जाओ। लेवल लेवल, इससे भी नहीं है, व्यू पे जाओ, मेन्यू बार चेक करने दो मेरे को थोड़ा सा, रन ईयर ऑप्शन। बट ये वो है क्या, क्लिक करो एक बार देखते जरा, ये शायद वो नहीं है, ना ना। इसको क्लोज कर दो। लेफ्ट साइड में देखो प्रोजेक्ट, वो सर्च लेंस आइकन है, लेंस आइकन, इसके जस्ट में ऊपर फोल्डर आइकन है, टॉप पे, और पर ये वाला, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, क्लिक करो इस पर। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट आ जाएगा। फाइल पे वापस जाओ, ओके, एडिट पे जाओ, इसमें मैंने दिख नहीं रहा है, ओके, सिलेक्शन, अच्छा टर्मिनल पे जाओ, टर्मिनल लास्ट वन, वो दिखना भी दिख ही नहीं रहा क्लियर, टर्मिनल टर्मिनल, अरे टर्मिनल लिखा है ना उस पर, टर्मिनल मेन्यू बार, हेल्प पे नहीं, टर्मिनल किधर है? ऊपर ही रन के साथ में तो है मेन्यू बार, ऊपर जैसे फाइल था, ओ एडिट था, टर्मिनल, ओके। फर्स्ट वाला क्लिक करो, न्यू टर्मिनल। ठीक है, देखो पाथ वही आ रहा है, सी जावा एंग्लो करके। अच्छा। अभी जो हमने प्रोजेक्ट में कुछ चेंज तो किया नहीं, बस हमने एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया है बाय यूजिंग सम कमांड ऑफ एंगलर। जी। इसको रन कैसे करते हैं? इसमें लिखते हैं एन जी, लिखो यहीं पे टाइप करो टर्मिनल में ही, एन जी स्पेस SERVE सर्व, एंटर। अब ये क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को चलाएगा ये, जैसे हम लोग उसमें राइट क्लिक करते थे ना यूआई पर, यहाँ पे कमांड चलती हैं सारी, तो कमांड से प्रोजेक्ट रन होगा, बिल्ड होगा, और कमांड से ही रन होगा, क्रिएट भी कमांड से होगा, बिल्ड भी उससे ही होगा। अब देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट रन हो गया। अब अपना कोई भी ये ब्राउज़र ओपन करो, उस पर लिखो, यूआरएल पे, तो यूआरएल पे एक नया टैब ओपन करो, लिखो लोकल होस्ट कॉलन 4200, एंटर मार दो। दिस इज योर डिफॉल्ट पेज, जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया ना, उसका आउटपुट ये है।
तो अब तुम्हारा सिस्टम पे एक एंगुलर का सर्वर चल रहा है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लोड करके ला रहा है ये। सर्वर की एक्चुअली ये एचटीएमएल फाइल से तो वो सब रेंडर ही कर रहा है ब्राउजर, कोई सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। वी डोंट यूज एनी सर्वर क्योंकि ये फ्रंट एंड कोड है। सारा कुछ जो ब्राउजर हमारा है दैट सपोर्ट्स दैट। सो इसमें एंगुलर के अंदर क्या पड़ा है, एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट एंड अदर फाइल्स। तो वो सब कुछ हमारा जो ब्राउजर्स हैं, मॉडर्न ब्राउजर्स, दे कैन रेंडर एवरीथिंग एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो ये आउटपुट आ गया तुम्हारे पास।